Now, am I audible to everybody? Am I audible and visible to everybody? Please tell me so that we can go ahead. Yes, am I audible and visible? Am I audible, guys? Now, yes, बताइए quickly. Okay, great. Thank you, Sinu. Okay, hello Om Pranav. How's you, beta? And you're preparing for which examination? Om? Yes, I went through all your I read all your comments, and I'm very happy that you have like you are such a beautiful soul that you were so much worried about this sound. I'm very happy and thankful to you, Om. It's only because of you that I came to know कि I'm not audible. Because बेटा मैं वीडियो खुद से मुझे नहीं समझ में आता कि ये ऑडिबल है या नहीं. मुझे आपके कमेंट से पता चलता है कि वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट. और मुझे आपकी कमेंट तब दिखती है जब मैं लाइव चैट ओपन करता हूँ. सो द मोमेंट आई ओपन द लाइव चैट, ओम, तो आई सॉ योर कमेंट्स एंड देन आई checked everything and now it is fine. So thank you very much, Om, for such a beautiful language and for such a beautiful sanskars that you got from your home and from your family, and that you showed into the live chat. Thank you very much, Om. चलिए आगे. So I hope you got whatever you got that. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. This is about me, guys. On Unacademy, you will be getting daily live classes. Then you will get structured courses on Plus as well as Iconic platform. Okay. Then आपको इस पे लाइव टेस्ट भी मिल जाएगा Unacademy पे. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा. अरे इशिता, इट्स हिज दिस इज हाउ ही इज ग्रोन अप ना. उसके फैमिली ने उसे इसी तरह के संस्कार दिए हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना. है ना. ठीक है इशिता. यस. सो देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ओम नहीं सुधरता है तो आई एम जस्ट ब्लॉकिंग हिम, डोंट वरी. यस, चलिए आगे. So everything is recorded, so आपको unlimited access मिल जाता है. Then these are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. When you take a single subscription of Unacademy, this single subscription will give you access to all the subjects that are taught in GS mains as well as that are taught in GS preliminary examination. Okay. प्रियंका वस्तु, जस्ट कीप फॉलोइंग माय वीडियोस, दैट इज मोर देन इनफ फॉर 2021. आपको साइंस के लिए कुछ भी नहीं करना, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस रेगुलरली विदाउट एनी. Ramandeep is saying, sir, slides are blur. I don't think so. Is it? तनुजा, शो हो जाएगी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. आपने लेट ज्वाइन किया है ना. सो जनरल स्टडीज प्री और मेंस के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, इंक्लूडिंग ऑप्शनल कोर्स एज वेल एज. जब देखिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर, एंड दिस पर्सनल मेंटोर विल हेल्प यू टू study regularly in a structured manner. A 12-month iconic subscription with SKUS codes 10% discount will cost you 57,600, and a 24-month iconic subscription with SKUS code that will give you 10% discount will give you 89,000. You will be paying 89,100 rupees. Clear? Then in case of Plus subscription, instead of paying 44,000 rupees, you will be paying 39,600 because SKUS code will give you 10% discount. And in case of 24-month subscription, instead of paying 64,000, you will be paying 57,600 again, because this viral code of success SKUS will give you 10% discount. Let's go. So we were discussing about the black hole. Now I am going to ask you a few questions. Can you explain what is black hole in a single word? और जितने मिनिमम वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतने मिनिमम वर्ड में. do one thing, Ramandeep, just close the video and open it again.
एक बार वीडियो को क्लोज कर दीजिए, फिर से लिंक पे जाकर वीडियो ओपन कर दीजिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर. ओके, so please define what exactly black hole is. That's what we discussed in this 2020 का जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है, that is to the people who are working on the black hole. ठीक है, yes, I am waiting for your answer guys. So basically black hole is a place or it is the curvature in the space and time. स्पेस एंड टाइम का ये कर्वेचर है which has infinite gravity and no mass. Infinite gravity and no mass. No, Priyanka Basu, black hole is different, neutron star is different. Very good, Kapil. Black hole deformation of space and time. Yes, it is the deformation of space and time. So black hole is the deformation of space and time with infinite gravity and no mass. Okay, very good. तनुजा ने भी एक डेफिनेशन दी है. It is a space-time fabric where nothing can escape. Actually, it is the deformation in the space and time fabric where nothing can escape. Even light cannot escape. Hello, अंकिता भारती. चलिए आगे, हमने ये पूरा डिस्कस किया था. स्टेलर नेबुला, एवरेज स्टार, रेड जायंट, प्लैनेटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल. So every star's life starts with stellar nebula and the end product of in every star's life is either white dwarf if mass of that star is less than Chandrasekhar limit, or neutron star, or a black hole, or neutron star or a black hole. Okay, clear? So in case of neutron star and black hole, if the mass of that star is more than Chandrasekhar limit, तो ये दो में convert होगा star, and if the mass of the star is less than Chandrasekhar limit, then star will convert into a white dwarf. Next, what is Chandrasekhar limit? It is 1.4 times the mass of our sun, और उसी को उन्होंने term use की है solar mass. Then हमने ये भी देखा था कि what is electron degeneracy. So basically electron degeneracy is nothing but, can anybody tell me what is electron degeneracy? कोई बता सकता है what is electron degeneracy pressure और what is electron degeneracy quickly, ताकि मैं आगे जा सकूं. ओके प्लीज गाइस, चलिए बताइए जल्दी से. प्रियंका बसु, हमने ब्लैक होल कुछ 2 दिन पहले से ही स्टार्ट किया है डिस्कस करना, तो यू कैन लाइक वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन यूट्यूब. ओके, क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर इज नथिंग बट व्हेन वी पैक और क्लोज द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर क्रिएट होता है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर दैट हेल्प्स व्हाइट ड्वार्फ टू रिमेन व्हाइट ड्वार्फ. ये याद रखिए, white dwarf remains white dwarf because of electron degeneracy or electron degeneracy pressure. Okay, clear? Very good, Ramandeep. Electron compressed in a small volume, high pressure and momentum when electrons are compressed. Very good, Tanuja and Ramandeep. Great. देखिए सभी को आ रहा है. It occurs when electrons are compressed into a very small volume. Navisha Chaurashia. Great. चलिए आगे. Yes, this is what electron degeneracy is. It occurs when electrons are compressed into a very small volume and it creates momentum that creates a pressure. Fine. Then helium flash हमने देखा था, it is explosive ignition of helium. Then again, what is black hole? Region of space time where gravity is so strong that nothing, no particles or even light cannot escape, and it is the deformation in the space and time. This is black hole. This is the image of black hole that is captured by the Event Horizon Telescope. This telescope captured the image of the black hole. ये जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल और बीच में ब्लैक कलर, तो ये जो सर्कल है ना, that is Event Horizon. Then what is black hole? It is an extremely dense object. Yes, obviously हमने white dwarf में ही देखा था. A teaspoon of white dwarf, it weighs in tons. It weighs in tons, but इससे भी ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? न्यूट्रॉन स्टार की. एंड द डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल इज मोर देन न्यूट्रॉन स्टार. न्यूट्रॉन स्टार से भी ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? ब्लैक होल की. तो नेचुरली इट इज एन एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट.
within a black hole event horizon. What is event horizon? Can anybody tell me? Can anybody define what is event horizon? Guys, this revision is very crucial because these terms are such that you cannot remember them in a single understanding. So we need to revise it again and again. That's why I am doing this. Quick revision kar rahe hain hum. So please tell me what is event horizon. Event horizon is the पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मीन्स अभी हमने कहा था ना कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम अ ब्लैक होल, इवन लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन नॉट रिटर्न फ्रॉम द ब्लैक होल और एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल. लेकिन कहां तक? if any object, particle or light crosses event horizon, then it cannot return. That's why we call this, it's a point of no return. Lakshmi Priya Sahu, great, and Anand, great, and Priyanka Basu, great. So that is event horizon. Fine. It is black hole surface called its event horizon. It is the boundary where the velocity needed to escape exceed the speed of light. ये भी हमने डिस्कस किया था. If some object has velocity more than the speed of light, then if an object has the velocity more than the speed of light, in that case that object can escape even from the event horizon. But as we know, in the universe maximum speed limit is light. The speed of light is the maximum speed that can be achieved in a universe. That's why it is event horizon. Okay, next. ओके, ब्लैक होल हमने डिस्कस किया था. फाइन. ओके, इलिप्टिकल गैलेक्सी में वो जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, दैट इज अ ब्लैक होल इन अ मेसियर 87. इट इज इलिप्टिकल गैलेक्सी विच इज लोकेटेड 55 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ. हाँ, अब यहाँ पर आते हैं हम. देखिए, व्हाट वी सेड, ब्लैक होल इज exotic phenomenon. Black hole is the most exotic phenomenon. Yes or no? Black hole is the most exotic phenomenon. Fine, very good, Anuradha Sharma. अब देखिए, we are in the news. The scientists that got the Nobel Prize for working on the black hole, उनके नाम है. पहले साइंटिस्ट है पेनरोज. नो नीड टू रिमेंबर द नेम. इनका नाम याद नहीं रखना है आपको. उन्होंने क्या कहा, दैट द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल. मींस जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी टॉक्ड अबाउट ब्लैक होल. उन्होंने बात की थी, आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी टॉक्ड अबाउट ब्लैक होल, but it never explained the existence of black hole. Mr. Penrose, he proved that yes, general theory of relativity, if we agree to each and everything that is given in a general theory of relativity, in that case it can lead to the formation of black hole. So basically इन्होंने ये प्रूव किया कि black hole can be formed. ये किसने प्रूव किया? पेनरोज ने. आगे आपको पेनरोज फिर से मिलेंगे, ठीक है. वाइल गेंजेल जो थे, जिनका एज 68 है, एंड मिस गेज फोर्थ वुमन है. शी इज द फोर्थ वुमन टू रिसीव फिजिक्स नोबेल सिंस 1901. दैट्स ग्रेट प्रियंका. सो इन्होंने क्या कहा, दैट एन इनविजिबल एंड एक्सट्रीमली हेवी ऑब्जेक्ट गवर्न्स द ऑर्बिट्स ऑफ स्टार्स एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी. अब बहुत केयरफुली सुनिए मुझे, बहुत ही केयरफुली. The one scientist whose age was 89, he said that black hole can be formed. Black hole's existence was predicted in general theory of relativity, and he proved that yes, black hole can be formed. और दूसरे जो दो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है. No, I will tell you if there is anything to remember, Ranandeep. Okay, Ishita, just keep listening, it will be clear. अब मेरा ये ब्रेक मत कीजिए आप प्लीज. लाइव चैट में अभी कुछ मत बोलिए जब तक मैं ये कंप्लीट एक्सप्लेन ना करूँ ये स्लाइड. प्लीज हाँ, लाइव चैट में शांत रहिए. तो देखिए, दूसरे दो साइंटिस्ट ने कहा कि जो भी गैलेक्सीज है, फॉर एग्जाम्पल मिल्की वे गैलेक्सी, तो एवरी गैलेक्सीज are governed by an extremely heavy and invisible object. मतलब in short इनको क्या कहना था कि at the center of every galaxy there exists an extremely heavy object
and which is invisible. क्या कहा दूसरे दो साइंटिस्ट ने? दैट एवरी गैलेक्सी सेंटर has an extremely heavy object which is invisible, and the orbit or all the stars in that galaxy, they orbit around this extremely heavy object and which is invisible, that is black hole. So इन दो साइंटिस्ट ने, दूसरों वालों ने सिंपली क्या बताया कि ब्लैक होल or every galaxies have black holes at their center and all the stars in that galaxy orbit around that black hole. बस मेरा explanation हो गया. अब आप बताइए, if you want to ask anything you can ask me. From this first point you need to just remember one thing, that black hole is present at the center of every galaxy and all the stars in that galaxy revolve or orbit around that black hole, and planets orbit around the star and satellite orbit around the planets. It's this simple. तो मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, और हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है ना, उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है. इट्स दैट सिंपल. नाउ यू कैन आस्क मी. आई एम डन. इतना पॉइंट याद रखना. अब यहाँ पे याद रखिए, फिजिक्स का नोबेल सिंस 1901 to 2020. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. 1901 to 2020, till this time there are only 4 women including Miss Gaze. Only 4 women received physics Nobel Prize. उसमें एक है आपकी मैरी क्यूरी, है ना, उनको केमिस्ट्री का भी मिला था और फिजिक्स का भी मिला था. प्रियंका बसु, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली अबाउट ब्लैक होल, फर्स्ट डे है टोटल कंफ्यूजिंग. लीव इट प्रियंका, प्लीज लीव इट प्रियंका. पहले आप इनिशियल वाले वीडियोस देखिए और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा. अभी बस अटेंड कीजिए, ठीक है. ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एवरी गैलेक्सी हैज ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी and stars in that galaxy orbit around this black hole, planet orbit around the star and satellite orbit around the planet. और उल्टा जाते हैं हम, moon which is the satellite of earth orbits around earth which is a planet orbits around sun, and sun which is a star, it orbits around the black hole which is present at the center of Milky Way galaxy which is our galaxy. आ गया सभी को समझ में? Everybody got it? Yes. We are going to the next slide. See, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आपको इस स्लाइड से बस ईयर याद रखना है. थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905. कैन एनीबॉडी टेल मी एनी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1905 इन इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट इवेंट बताइए दैट टुक प्लेस इन 1905, the same year when Albert Einstein who proposed the theory of special relativity. And theory of special relativity ने क्या कहा? That laws of physics are the same for all non-accelerating observers, and that the speed of light in a vacuum was independent of the motion of all observers. So basically special relativity is talking about the non-accelerating observers. Non-accelerating observer का मीनिंग क्या है? I am a non-accelerating observer right now, but if I am moving, I am sitting in a car, and अगर मैं कार में से आपका लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं moving observer हुआ, accelerating observer हुआ. Okay, sir, it is proved that every galaxy has black hole as it is written that they proved it in our galaxy. Tanuja, yes, that's what that theory is, that every galaxy has black hole at the center. वेरी गुड. 1905 में जब इधर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे थे तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बता रहा था? थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी. ओके, सो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी 1905. नेक्स्ट, इन 1915, दैट इज एग्जैक्टली आफ्टर 10 years, Einstein spent 10 years trying to include acceleration in the theory and published his theory of general relativity. So theory of special relativity 1905, theory of special relativity 1905, and theory of general relativity 1915.
theory of special relativity about accelerating bodies, and theory of general relativity is about accelerating bodies or moving observers. आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पहला पॉइंट याद रखना है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रपोज की? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटीज, वन इज स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, अनदर इज जनरल रिलेटिविटी थ्योरी. Special relativity theory talks about non-accelerating observers. General relativity theory talks about accelerating observers. Clear यहाँ तक? Special theory of special relativity was proposed in 1905 and theory of general relativity was proposed in 1915. यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. In theory of general relativity, Einstein said that, or Einstein told that, in theory of general relativity, Einstein said that gravity is not force. Very important. Listen to this very carefully. Okay? Listen to this very carefully. Gravity is not force. उसने कहा gravity is distortion in space and time. What is gravity according to Einstein? It is the distortion in space and time. इसे बहुत केयरफुली सुनना है. मैं आपको अभी दो चीजें यहां एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? वन, न्यूटन्स ग्रेविटी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, gravity is a force of attraction. Okay? According to Newton, gravity is a force of attraction, and according to Einstein, gravity is the distortion in the space and time. दोनों में डिफरेंस याद रहेगा, distortion in space and time. Okay? दूसरी बात, आइंस्टाइन ने जब ये कहा कि distortion in space and time, तो it depends on the mass. The distortion in space and time, it depends on the mass. मैं इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल आपको एग्जांपल देने वाला हूं. Let me see whether I took that image or not. Yes, here you go. See, I already told you vacuum is made up of a fabric of time and space. So this is the fabric of space and time जो आपको दिख रहा है. Now इस fabric of space and time में आपने क्या किया? अर्थ को क्या किया? रख दिया. So because of अर्थ क्या हो गया? स्पेस एंड टाइम फैब्रिक डिफॉर्म, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया. इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज डिप्रेशन आ गया, है ना? क्या आ गया? डिप्रेशन आ गया. अब अर्थ का वेट है सपोज 50 किलोग्राम. वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल. ओके, द वेट ऑफ अर्थ इज 50 किलोग्राम. एंड सपोज दूसरा एक है जुपिटर. जुपिटर का वेट है 150 किलोग्राम. तो मुझे बताइए ये डिप्रेशन या डिफॉर्मेशन 150 किलोग्राम वाला जुपिटर ज्यादा डेप्थ वाला क्रिएट करेगा या 50 किलोग्राम वाला अर्थ क्रिएट करेगा? इट्स नेचुरल कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डीप डिप्रेशन क्रिएट होगा. दैट्स व्हाई यहां आइंस्टाइन कहता है, यहां आइंस्टाइन क्या कहता है? दैट मैसिव ऑब्जेक्ट्स कॉज डिस्टॉर्शन इन स्पेस एंड टाइम. दैट मैसिव ऑब्जेक्ट्स cause distortion in space and time, which is felt as gravity. This distortion in space and time is felt as gravity. Okay, this distortion in space and time is felt as gravity. चलिए आगे. Now tug of gravity. See, according to Newton it is a force of attraction, and according to Einstein it is the deformation in the space and time. Okay, in case of Einstein, the gravity depends on the massiveness of the objects as well as the distance. दो ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस है और उनका मास कितना है, इस पे डिपेंड करता है क्या? ग्रेविटी. ठीक है? सो दिस इज अबाउट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. सो इसे कहते हैं टग ऑफ ग्रेविटी. अर्थ पे कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट, एंड इफ यू गो इनटू द यूनिवर्स कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटी. ग्रेविटी की कंसेप्ट समझ में आ गई? ग्रेविटी की कंसेप्ट सभी को समझ में आ गई? दिस इज ग्रेविटी.
सो ब्लैक होल के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ अर्थ यू कैन सी द बॉटम ऑफ दिस डिप्रेशन। ब्लैक होल इतना ज़्यादा मैसिव है, इतना ज़्यादा मैसिव है, इतना ज़्यादा मैसिव है कि हम उसका बेस ही नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर। सो इसे कहते हैं ग्रेविटी। चलिए आगे। नाउ हाउ वी नो दैट ग्रेविटी इज द डिफॉर्मेशन इन स्पेस एंड टाइम, और डिफॉर्मेशन इन स्पेस एंड टाइम कैन लीड टू ग्रेविटी, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। सी गाइस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लेंस? Normally, light travels in a straight path. Light travels in a straight path. So this is the source of light. Light is traveling in a straight path. When this light reaches here, actually the path of light should be like this. But because of the lens, light bend हो गई and it is traveling like this. So lens can cause bending of light. Lens can cause bending of light. अभी के लिए इतना याद रखिए। What lens can do? Lens can cause bending of light. Gravitational lensing मुझे आपको explain करनी है ना। That's why what is the meaning of lensing? Anything that causes bending of light, उसे हम term क्या use करेंगे? That is possible. Bending of light is possible because of lens, इसलिए हमने term use की lensing। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां देखिए, लाइट अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक होल इज बेंट कॉजिंग इट टू एक्ट एज अ लेंस फॉर द थिंग्स दैट लाइट बिहाइंड इट। चलिए आगे, आपको मैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग शो करता हूं। सी, दिस इज अर्थ, या आप ये कंसिडर कीजिए कि ये ऑब्जर्वर आप हो, यू, दिस इज यू ऑब्जर्वर, ठीक है। और इन बिटवीन सपोज ये है आपका, दिस इज ब्लैक होल, suppose this is black hole, fine. So when light ray starts traveling from this, so this light ray should travel like this to you, but instead, yes Piyush skipper, I am there, yes I am on Unacademy app also. So जब ये लाइट इस मैसिव ऑब्जेक्ट के पास आती है ना, ये बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको बेंड जैसा, यहाँ डिप्रेशन दिख रहा है, तो इस डिप्रेशन की वजह से ये बेंड होकर आपके पास आती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, and bending of light because, and gravity is because of the massiveness of the object. So massive object create gravity and that gravity leads to the bending of light, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। में एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो पहला पॉइंट याद रखिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग? व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग? बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी ऑफ दिस मैसिव ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यूपीएससी ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन ग्रेविटेशनल लेंसिंग, and if you are observing gravitational lensing, it means black hole or something massive exist। अगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग आपको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग वेरी मैसिव इज प्रेजेंट बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है तो उसे उसकी वजह से क्या होगा? ग्रेविटेशनल लेंसिंग होगा। अगर मैसिव ऑब्जेक्ट है तो वो हमें दिखनी चाहिए ना, लेकिन दिखती नहीं बिकॉज दैट इज अ ब्लैक होल। सो इवन existence of black hole can be explained because of gravitational lensing। existence of black hole can be explained because of gravitational lensing। तो इस स्लाइड से आपको बस कंसेप्ट समझनी थी, और वो कंसेप्ट क्या थी? what is that concept guys? just give me a minute guys। आपको कौन सी कंसेप्ट यहाँ पे समझनी थी? दैट ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल, या फिर इफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज हैपनिंग दैट मीन्स ब्लैक होल एग्जिस्ट।
existence of black hole can be explained with the help of gravitational lensing. So the first experimental evidence of presence of black hole, or the first experimental evidence of presence of gravity, or the first experimental evidence of presence of gravity, concept of gravity told by Einstein, concept of gravity told by Einstein, इन सब का जो पहला experimental evidence है is gravitational lensing. Yes, Anand, it can also happen because of the dark matter. Gravitational lensing can also happen because of the dark matter. Okay, चलिए next. So this is the bending. The same type of bending can happen because of the massive objects. Now, gravitational lensing. Einstein's cross, a quasar in Pegasus constellation, is an excellent example of gravitational lensing. You already know quasar. Can anybody tell me what exactly quasar is? Any idea about the quasar? Because we already discussed about the quasar. Okay, so four images of quasar appear around the galaxy because the intense gravity of the galaxy bends the light coming from the quasar. बहुत सिंपल सी चीज है. सपोज ये क्वासार है, ठीक है, ये क्वासार एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल पोजीशन, this is actual position of quasar, but you can see this quasar here, you can see this quasar here, as well as you can see this quasar here. Why? Because यहाँ से लाइट इमिट हुई, लेकिन इन बिटवीन देयर इज अ मैसिव गैलेक्सी जिसका नाम है आपका पेगासस कॉन्स्टलेशन. तो ये लाइट इस गैलेक्सी से जब पास हो रही है ना, तो ये बेंड होते होते इस तरह से यहाँ से यू विल फील कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, और यू विल फील कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, और यू विल फील कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर. तो आपको लगेगा कि यहीं पे क्वासार है, यहीं पे क्वासार है, यहीं पे क्वासार है, बट एक्चुअली क्वासार कहाँ है? यहाँ पे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग. Einstein's cross, a quasar. Okay, hello Harising Mund. Large object like a star that is far away and that shines very brightly and sometimes sends out strong radio signals. Yes, that is correct, Shubham Shukla, but more correct is quasar. Quasar is something which has black hole as the center. उसके सेंटर में ब्लैक होल होता है, वो बहुत ज्यादा रेडिएशन लाइक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल एज यू सेड एमिट करता है. समझ में आया? ये लास्ट वाली लाइन आपको याद रखनी है या समझनी है. फोर इमेजेस ऑफ द क्वासार अपीयर बिकॉज लाइट दैट इज कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार. सुजीत, फोर इमेजेस ऑफ क्वासार अपीयर बिकॉज यस केशव अग्रवाल इट कम्स 2020 प्रीलिम्स में प्लांट और एनिमल सेल्स पे क्वेश्चन था, तो आप बिल्कुल आता है साइंस 11th एंड 12th का. Okay, fine. So four images of quasar appear around the galaxy because the intense gravity of the galaxy bends the light coming from the quasar. This is an example of gravitational lensing, bending of light because of gravity of the galaxy. ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. समझ में आया ना? पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. देन मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये आपको याद नहीं रखना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सर मे बी इट हैपन बिकॉज ऑफ डार्क मैटर. आनंद, नो, दे आर सेइंग इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द गैलेक्सी इटसेल्फ. फाइन. नाउ व्हाट इज क्वासार? Listen to this very carefully because quasar is very 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 important for your prelim, whether you are appearing for 2021 or you are appearing for 2022. जब भी appear करना है, जैसे अब आपको concept of black hole एकदम clear है, then आपको white dwarf एकदम clear है, then आपको न्यूट्रॉन स्टार एकदम clear है. उसी तरह अभी क्वासार को clear कर लो, और इन सब चीजों को मैं रेगुलरली रिपीट करता रहूंगा. Okay, Keshav Agrawal, it's UPSC, it is unpredictable public service commission, so you need to read everything of 11th 12th, particularly biology के तो सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे. केमिस्ट्री के सिलेक्टिव चैप्टर्स है, आई एम कमिंग विथ NCERT ऑफ साइंस सून, उसमें आपका हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज इट? क्वासार, इट इज एक्सट्रीमली ल्यूमिनस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस. एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ reactions or chemical reactions taking place in that, उसे कहते हैं हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस. ओके,
Fine. So it is extremely luminous, active galactic nucleus in which a supermassive black hole with mass ranging from millions to billions of times the mass of sun is surrounded by a gaseous accretion disk. चलिए मैं quasar. So this is super massive black hole. In case of physics के show, you just need to depend on the current affair. Like right now, I'm explaining physics only. Supermassive black hole, and around this supermassive black hole, there is extremely luminous accretion disk. It's like event horizon only. Extremely luminous accretion disk is present, and which is gaseous accretion disk. तो देखिए, event horizon is the boundary between black hole and the galaxy from where no one can return, or point of no return. And what is accretion disk? Accretion disk is present in a quasar. It is the gaseous structure that is present around a supermassive black hole and which is extremely luminous. So I hope you got what is quasar. Quasars, they have black hole or supermassive black hole at the center. Clear? हो गया clear सभी को? I know these things are bit heavy and difficult to understand, but अगर आप ये difficult है इसलिए समझना ही छोड़ दोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ना. और ये सारी चीजें रोज रिपीट होगी. जब भी हम नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे तो ये ब्लैक होल वाला पार्ट में बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे. ठीक है? सो आज के बाद अगर आप ब्लैक होल कहा जाए तो यू नो व्हाट इज ब्लैक होल, बट आज के बाद अगर कोई कहे बताओ चलो क्वासार क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर. यू विल बी एबल टू आंसर गाइस. ओके, चलिए आगे. दिस इज क्वासार. सो ये जो दिख रहा है दिस इज ब्लैक होल, और ये जो दिख रही है आपको दिस इज accretion disk of the quasar. And as already someone told in the live chat is that they emit radiation. So this is the radiation emitted by the quasars. These are the radiations emitted by the quasar. So in case of quasar you need to remember 1 supermassive black hole, 2 accretion disk, and 3 radiations. That's it, quasar. Again back to the gravitational lensing. Gravitational lensing इसे यहाँ पे as the light emitted by distant galaxies passes by a massive object. Thank you Navisha Saurashya, thank you very much, and I will repeat it again and again ताकि आपको ये कभी no, it is a star. Tanuja Bahel, it is a star. It is not a galaxy because it has accretion disk which do not contain stars. Galaxy में stars होते हैं. मैसिव ब्लैक होल कह रहा हूं. ओके तनुजा, हाँ देखिए, when light emitted by a distant galaxy passes by a massive object in the universe, the gravitational pull of this massive object distorts or bend the light. That is gravitational lensing. Gravitational lensing की definition सभी को समझ में आ गई? Hello Zafrin Shaji. Everybody understood the definition of gravitational lensing? Quickly बता दीजिए. If you understood what is gravitational lensing, it is the distortion or bending of light emitted by the galaxies or distant galaxies because of the gravity or gravitational pull of the massive objects like black hole. That is gravitational lensing. अब तक मैंने आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन किए आज के सेशन में. One is gravitational lensing and another is quasar, and you need to answer one more question. Gravitational lensing is an experimental evidence of what? Gravitational lensing is an experimental evidence of what? आनंद, रेडिएशन का मतलब होता है इट कैन बी गामा रेडिएशन, एक्स रेज, इट कैन बी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एनीथिंग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से कुछ भी हो सकता है. ये कुछ भी हो सकता है आनंद. ओके, which type of radiations emitted by quasar? Quasar can emit any type of radiations that I just named. Fun? Clear? मैंने और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको कि gravitational lensing is the experimental evidence of what? I am waiting for that answer. Bending of light due to gravity of black hole. Correct?
Correct? Yes, very good, Kapil. So gravitational lensing is the experimental evidence of existence of black hole, or it is the experimental evidence of the proposals given by the Einstein in the general theory of relativity. We are going to the next slide. This is gravitational lensing. These are the distorted light rays, lensed galaxy images. ओके गैलेक्सी ये लाइट इमिट कर रही है और ये मैसिव ऑब्जेक्ट है और फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग हुआ. वेरी गुड तनुजा, वेरी गुड रमनदीप. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट. वेरी गुड चर्चिका. ग्रेविटेशनल लेंसिंग, फिर से आ गए हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे. वेरी गुड आनंद. हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग आज खत्म करेंगे. ओके, व्हाट ग्रेविटेशनल लेंसिंग अलाउ साइंटिस्ट? इट अलाउज साइंटिस्ट टू सी pretty cool things such as, since the light traveling around the lens takes a different path, each traveling over a different amount of time, scientists were able to observe a supernova occur 4 different times as it was magnified by a massive galaxy. Wow. I don't know Navisha, I don't know. Thank you very much. चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ. ये सुनकर ना आपको इतना मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा कि आप बोलोगे सर हम तो फिजिसिस्ट हो गए, ये अभी आप बोलोगे. ठीक है, चलिए अगर आपको ये बोलना है तो यू नीड टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बहुत ही केयरफुली आपको मुझे सुनना पड़ेगा, तभी आप ये बोल पाओगे कि सर हम तो फिजिसिस्ट बन गए. हियर यू गो. Now guys, you will answer me what is supernova. Please tell me what is supernova. I will go ahead after that. So supernova, suppose this is a massive star which is dying a explosive death, उसे हमने कहा supernova. So this is supernova. So because it is dying a explosive death, so it will emit light. Fine. So this is something happening at a very long distance in the space, जिसे हमने नाम दिया supernova, and it is emitting light. Now we are here. ये रहा सचिन कदम और उसके स्टूडेंट अर्थ पे. ठीक है, ये हम हो गए ऑब्जर्वर और ये हो गया source of light. This is source of light. Very good Kapil. Explosive death of a star. Sujite, very good. Explosion of star. Lakshmi, Priya, high explosion death of star. Great. Shubham, a star that suddenly becomes much brighter because it is exploding. Very good Shubham. Tanuja, supernova is a death of giant star. Very good Tanuja. Charchika, massive star converted into supernova. Okay, and Smoming, explosion of star. Right. So it is a source of light. Now what will happen? This light will start traveling towards the observer. But हुआ ये कि ये बीच में इसको मिल गया एक massive, और we will call this super massive black hole. ओके, सुपर मैसिव ब्लैक होल. तो हुआ ये कि ये लाइट जब इस सुपर मैसिव ब्लैक होल से पास हुई तो बेंड होके इस ऑब्जर्वर के पास आई. फाइन. अब ये ऑब्जर्वर ने इस लाइट को ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वर को लगेगा, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि सुपरनोवा इज हैपनिंग हियर. Another source of light that was traveling from the supernova, it bended because of the supermassive black hole, and then after bending it reached the observer. अब इस observer को लगेगा कि this supernova is taking place here. Okay. Another source of light, again it was traveling and ये इस तरह से यहाँ तक आ गया और यहाँ पे इसको इस तरह से बेंडिंग मिला, तो अब इसे लग रहा है कि यहाँ सुपरनोवा हुआ. मतलब एक सिंगल सुपरनोवा साइंटिस्ट कितनी जगह पे देख रहे हैं? दे आर वाचिंग सुपरनोवा और एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ स्टार एट 4 places, and every time it is happening at different time. लोकेशन और टाइम दोनों चेंज हो गया. It is possible because of gravitational lensing, guys. It is possible because of gravitational lensing. So
Gravitational lensing allows scientists to observe a supernova at 4 different times. Isn't it cool? Isn't it cool that gravitational lensing allowed scientists to observe supernova at 4 different times? This is the application of gravitational lensing. Everybody got it? Application of gravitational lensing. I explained you what is gravitational lensing. I told you what is gravitational lensing is the evidence of what, and I told you the application of gravitational lensing. Gravitational lensing help us to study the phenomenons which happened millions or billions years ago. मतलब 1000 साल पहले अगर किसी स्टार की डेथ हुई है और उसकी लाइट अगर अर्थ पे लेंसिंग की वजह से अभी पहुंच रही, तो वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व दैट फेनोमेनॉन व्हिच टुक प्लेस 1000 ईयर अगो. सो हमने टाइम ट्रैवल किया या नहीं? नो प्रियंका कुमारी, इट डज नॉट. हमने टाइम ट्रैवल किया या नहीं? दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल एंड इफ वी कैन ट्रैवल विथ अ स्पीड मोर देन लाइट, वी कैन एक्चुअली टाइम ट्रैवल. तो अभी जो आप स्टार देख रहे हो ना, आज नाइट को अगर आपके स्काई में आपको स्टार दिख रहा है ना, सो यू आर एक्चुअली वॉचिंग द स्टार विच एग्जिस्टेड लाइक 1000 years ago. It's so cool. This is the beauty of science. अच्छा, और एक बात, आप सन की तरफ डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, लेकिन जब भी आप देखोगे ना, तो आपको जो सन दिख रहा है ना, दैट सन एक्चुअली एग्जिस्टेड सम 8 minutes ago. अभी वो उस तरह का नहीं है. आपको जो सन दिखा ना, वो 8 मिनट पहले वैसा था, क्योंकि लाइट रेज टेक 8 minutes टू रीच अर्थ. तो आप पास्ट को देख रहे हो. यू आर वॉचिंग सन, एक्चुअली यू आर वॉचिंग द सन विच एग्जिस्टेड 8 minutes ago. आपने पास्ट में जाकर देख लिया सन को. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और थियरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज लिंक्ड टू द लाइट, which is linked to the light. Okay, clear? So gravitational lensing allows scientists to observe a supernova that occur at 4 different times. चलिए आगे, ये रहा आपका. ओके, ये हुआ आपका पहला एविडेंस, ग्रेविटेशनल लेंसिंग. चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन होमवर्क. The light we will see today was emitted way before our birth. That's true, Soumik. चलिए, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ. Guys, please read about black hole. Guys, please read about white dwarf. Guys, please read about neutron star. Guys, please read about quasar. Please read about gravitational lensing. आप हमें ने क्या करना है ना, इनको इतना अभी परफेक्ट कर लेना है कि आप इसे लाइफ टाइम ना भूले. सर, डू यू हैव टेलीग्राम ग्रुप? यस शुभम, इमीडिएटली आई एम शेयरिंग माय टेलीग्राम चैनल इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes. और क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ. ओके, ग्रेविटी भी पढ़नी है आपको. Please read about gravity, event horizon. Okay, fine. और 2 पॉइंट यार ऐड कर देता हूं मैं. Please read about event horizon and concept of gravity. Read about event horizon and concept of gravity given by Einstein. इतना आपको आज रीड करना है. जस्ट आपको ये सब पता है, बस एक बार रीड करोगे तो आप ज़्यादा बेटर वे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज. आज के लिए इतना ही. बहुत कुछ है हमारे पास, मैं ये बहुत ही परफेक्ट करने वाला हूँ आपका. सो डोंट वरी, अगर हमें ज़्यादा टाइम लगा तो हम ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन हम इसे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे. ठीक है, हम इसे कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ेंगे. सो शुभम, फॉर यू I am sharing my Telegram channel. So what you need to do guys, you need to subscribe to this Telegram channel ताकि आपको notes मिले. Then you need to follow me on Unacademy Learning app. You need to dedicate your hats to me on Unacademy Learning app, and you need
to use SKUS code for 10% discount on Unacademy learning app, whether you are taking a plus subscription or you are taking an iconic subscription. So this is my telegram channel, t.me/Sachin_Kadam1. Okay, tomorrow we are going to conduct a session on Unacademy learning at 8 a.m. and another session will be at 11:15 a.m. on YouTube. These are the two sessions of tomorrow, and instead of conducting a test tomorrow at 8 a.m. I am planning to continue these current affairs in 8 a.m. session. Okay, यही सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट मिस अनअकैडमी सेशन इन द मॉर्निंग. ओके, यस सुजीत, यस आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. कल सुबह 8 बजे का सेशन मिस मत कीजिए. शुभम शुक्ला, guys please help Shubham Shukla to contact me so that he will not miss the link of Unacademy session. मेरा कल का जो सेशन है Unacademy का, उसकी लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे बताया. One of the interesting lecture, and this all happened because of your mastery in teaching so well. अरे thank you very much Navisha Saurashia, thank you very much, means a lot. Okay guys, thank you, bye bye, take care. We are meeting tomorrow at 8 a.m. sharp 8 a.m.